So, Namaskar, Jai Jagannath. Good evening, ladies and gentlemen. This is Diksha Tiwari extending a warm welcome to all of you to the sixth edition of Odisha Travel Bazaar 2025, organized by the Tourism Department, Government of Odisha, in association with FICCI in this beautiful city of Temple, Bhubaneswar. I'll once again request everyone to please get inside, take their seats, get settled. This sixth edition of the flagship buyer-seller meet of the Odisha government is unique in more ways than one. It has brought together national and international travel and tour operators, destination management companies, special invitees representing different sectors of tourism such as MICE, wedding, adventure tourism, and of course, sellers from Odisha under one roof. We are delighted to have the presence of over 100 domestic tour operators from over 30 cities across India, more than 30 foreign tour operators from 17 countries, including Australia, the UK, Germany, Belgium, South Africa, Spain, and Singapore, who are here with us. And with folded hands and a lot of humility, we would like to extend a warmest welcome to all of them to Odisha. And yes, of course, we would also like to express our sincere gratitude to our sellers from the Odisha's tourism sector and all our special invitees because it is all your presence that is making this platform so impactful today. It is also a matter of great pride and prestige for us that the sixth edition of Odisha Travel Bazaar is being inaugurated by Shri Gajendra Singh Shekhawat Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, in the presence of Srimati Prabhati Parida, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, and other esteemed dignitaries, all of whom would be joining us in a very short while from now. We are also delighted that this time we could organize the FAM trips to key tourism destinations, be it Bhitarkanika, Raghurajpur, Puri Konark, and the Diamond Triangle before the B2B meetings kick off from tomorrow. So we are definitely expecting that the meetings will result in new partnerships that will go way beyond OTB 2025. But if I can just get a response from all of you, I think the FAM trips have been done. How did you like Odisha? Yeah, maybe a little bit of applause, a little bit of noise, something for the state. Yes, thank you. That definitely means a lot for us. You would be also happy to know that to position Odisha as a premier global tourist destination, the Odisha government is all set to introduce the Odisha homestay policy and Odisha adventure sports policy soon, and also launch a campaign titled Wed in Odisha, in lines with Wed in India to promote the state as a prime destination for weddings, especially temple and heritage weddings. And as a part of these efforts, we are also coming up with a special adventure workshop tomorrow, which will have the presence of DG Tourism, Government of India, Srimati Mugdha Sinha, and experts from land, water, and air-based adventure activities. I'm sure the valuable insights that would come during this workshop will also help the state to come up with a robust adventure sports policy. So a lot to look forward to during OTB 2025. Needless to mention, the central attraction will of course remain India's best kept secret, our state Odisha, one of the most beautiful states of the country. Odisha, the rising sun of the east, the land of Lord Jagannath, is where the old world meets the new. And this is a hallowed land of the brave, the intellectually and artistically gifted. This is where a million temples, known for their exquisite architecture and design, raise their heads in the sky as if to pay respects to the gods themselves. This is the land that has inspired a million minds, including the ferocious Emperor Ashoka, who was transformed into the messenger of non-violence and peace here, and then he took Buddhism to the entire world. We are also the land of endless opportunities, one of the fastest growing states, and a top investment destination in the country today. Beaches, sun, sand, wildlife, nature, art, craft, music, handloom, handicrafts, temples, monument, delectable cuisine,
and of course, the warmth and hospitality of the people of Odisha. We are one state, many experiences, and we are hopeful that you will all take back a bag full of happy experiences as part of the Odisha Travel Bazaar 2025. On that note, we will be starting with the inaugural ceremony in a very, very short while from now. But of course, as is the mandatory request, I'll once again request everyone to please settle down and keep their mobile phones in silent mode before we start with the inaugural ceremony. Thank you so much. यादगार होता है हर एक किस्सा इको रिट्रीट ओडिशा यादगार होता है हर एक किस्सा इको रिट्रीट ओडिशा Ladies and gentlemen, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Srimati Prabhati Paridai has joined us. We extend a very warm welcome to her and let's give a round of applause to welcome her. She's here with us. Grateful for her presence today. So a few more minutes and we'll be starting with the inaugural ceremony. Once again, we'll request everyone to please settle down.
Ladies and gentlemen, we have got the information that our chief guest, Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, should be joining any moment now. So I'll once again request, if there are still some of our guests who are outside, I'll request them to please come in, take their seats, get settled. And yes, a humble request once again, do keep your mobile phones in silent mode when the ceremony is on. जहाँ यादगार होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। अनजानी सी राहें खोले अपनी बाहें कुदरत के मीठे राज चल इनको गले लगाए सफर सफर में रहे हम सफर खुशियों के पल है चुराना सफर सफर में रहे हम सफर अभी तो दूर हमको जाना Come, explore Odisha by road. আবিষ্কার করো আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করো বিস্ময় আবিষ্কার করো আস্থা আবিষ্কার করো কলা এবং কারিগরি
আবিষ্কার করো উড়িষ্যার ঐতিহ্য। Odisha, India's best kept secret. जहां यादगार होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। अनजानी सी राहें खोले अपनी बाहें, कुदरत के मीठे राज चल इनको गले लगाए। हम सफर, अभी तो दूर हमको जाना। Come, explore Odisha by road. अनजानी सी राहें खोले अपनी बाहें, कुदरत के मीठे राज चल इनको गले लगाए। सफर सफर में रहे हम सफर, खुशियों के पल है चुराना। सफर सफर में रहे हम सफर, अभी तो दूर हमको जाना। Odisha, India's best kept secret. अनजानी सी राहें खोले अपनी बाहें, कुदरत के मीठे राज चल इनको गले लगाए। सफर सफर में रहे हम सफर, खुशियों के पल है चुराना। सफर सफर में रहे हम सफर, अभी तो दूर हमको जाना। Come, explore Odisha by road. जहां यादगार होता है हर एक किस्सा। इको रिट्रीट ओडिशा। Ladies and gentlemen, our chief guest, Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji has just joined. Can we have a huge round of applause as we welcome him to Odisha Travel Bazaar 2025. A very, very hearty and warm welcome to him. We are privileged that he is here with us for this event today. Thank you so much, sir, for your esteemed presence. A very warm welcome to him once again. A matter of pride and prestige for us that he's here with us today. And as is the customary practice, we will now request our chief guest, Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, and Honorable Deputy Chief Minister for Odisha, Srimati Prabhati Parida ji, and all our esteemed dignitaries to light the ceremonial lamp for an auspicious beginning to Odisha Travel Bazaar 2025. Our guests who have come from outside, this is a traditional way to start a program. That's how we've done it. I now request our esteemed dignitaries to join us on dais for the inaugural ceremony. And with a huge round of applause, please let's welcome on stage once again our chief guest, Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Srimati Prabhati Parida, Chairman, Departmentally Related Standing Committee 3 for Tourism, and Honorable MLA
Ekamra Shri Babu Singh, Chief Secretary, Government of Odisha, Shri Manoj Ahuja, Commissioner cum Secretary, Department of Tourism, Government of Odisha, Shri Balwant Singh, Shri Samat Verma, Director, Department of Tourism, Government of Odisha, Shri J.K. Mohanty, Co-Chairperson, FICCI Tourism Committee and Lifetime Chairman, HRAO, and Shri Mana Majumdar, Senior Advisor, FICCI. A very warm welcome to all our esteemed dignitaries on dais. And as is the traditional practice, we would like to also welcome all our esteemed guests on dais by presenting them with an uttariya. I'll request Commissioner cum Secretary, Department of Tourism, Government of Odisha, Shri Balwant Singh ji to first welcome Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji by presenting an uttariya to him. I'll request him to honor Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Srimati Prabhati Parida ji. We'll request him to welcome Honorable MLA Kamra Bhubaneswar, Shri Babu Singh ji. We'll request him to welcome Chief Secretary, Government of Odisha, Shri Manoj Ahuja ji. We'll request him to welcome Shri J.K. Mohanty, Co-Chairperson, FICCI Tourism Committee, Lifetime Chairman, HRAO. Directors are welcoming. I'll request Shri Samaji to also welcome Shri Manab Majumdar, Senior Advisor, FICCI. I'll also request him to welcome our Commissioner cum Secretary, Shri Balwant Singh ji, and Manab ji, of course. And I'll now request Joint Secretary, Department of Tourism, Government of Odisha, Shri Saroj Swain, to present an uttariya to Shri Samarth Verma as well. So welcoming all our dignitaries here on dais. Thank you so much, everyone. I request the media to please allow some space so that our dignitaries, our guests can... Yes, thank you so much. I'll request them to please... Yes, thank you so much. All right. So, ladies and gentlemen, in the words of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Odisha is a great destination to understand India. The rich vein of history and heritage Odisha encapsulates the unique spiritual journey it celebrates with Lord Jagannath as the nerve center, the stunning vistas of nature, breathtaking art and craft that present a culture and life so diverse and vibrant, and its people so warm and hospitable. Odisha, in true sense, is the microcosm of India. Like Honorable Prime Minister said, everything is visible at one place. The Odisha Travel Bazaar is a grand platform and opportunity to take Odisha to the world through all the stakeholders from India and overseas who are here with us today so that we can celebrate the unparalleled experience it presents. On that note, may I now request Shri Samarth Verma, Director, Department of Tourism, Government of Odisha, to present the welcome address. Honorable Union Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Srimati Pravati Parida Madam, Honorable MLA Ekamra Shri Babu Singh ji, Chief Secretary Shri Manoj Ahuja, Secretary Tourism Shri Balwant Singh, esteemed dignitaries, senior officials, industry leaders, domestic and international tour operators, investors, and all our valued stakeholders. A warm welcome to the 6th edition of Odisha Travel Bazaar 2025. From the majestic temples of Bhubaneswar to the golden beaches of Puri, from the wildlife-rich forests of Simlipal to the tribal heartlands of Koraput, Odisha is a land of unparalleled diversity. Odisha's commitment to enhance infrastructure, connectivity, and visitor experiences is evident in successfully hosting prestigious global events, including the 18th Pravasi Bharati Divas, which happened in January 2025, which showcased the state's tourism potential to dignitaries and the global Odia diaspora. Recognizing the growing demand for luxury, weddings, and corporate events, Odisha is actively enhancing infrastructure, accommodation,
and venue options to cater to the evolving segment. Our efforts to strengthen Odisha's tourism sector have already yielded remarkable results. We secured 8,000 crore worth of investment intents during Utkarsh Odisha, our biennial investment summit, which happened in January end of this year. We also signed an MOU with National Council of Science Museums to develop world-class interpretation centers and museums, enhancing visitor experiences. We have identified almost 6,000 acres of land across 15 key locations for private investment in tourism sector, ensuring structured development for long-term sustainability. This is indeed a shared vision for growth. We are proud to witness exceptional industry participation, reinforcing Odisha's prominence in domestic and global tourism market. Today's event is marked by the attendance of 100 plus domestic tour operators from across India, 30 plus foreign tour operators from global markets, and over 80 sellers from Odisha's tourism and hospitality sector. An adventure tourism workshop is also scheduled to be held tomorrow, where a detailed discussion on draft adventure tourism guidelines will be held, and various stakeholders will have a platform to voice their opinions and feedback. FAM trips have been opted by many of our DTOs and FTOs who are on a journey to experience Odisha like never before. The overwhelming response to Odisha Travel Bazaar reflects the trust and confidence the tourism industry has in Odisha's potential. As we move forward, this milestone event will foster impactful collaborations, new opportunities, and a shared vision to shape the future of Odisha's tourism sector. Once again, I welcome all of you to Odisha Travel Bazaar. Jai Jagannath. Thank you. Thank you, Sri Verma, for setting the context for Orissa Travel Bazaar 2025. Ladies and gentlemen, we have with us on stage Sri J.K. Mohanty, Co-Chairperson, FICCI Tourism Committee and Lifetime Chairman, HRAO, a household name when it comes to Orissa hospitality and tourism. We'll request him to address this gathering. It is a great privilege for me to welcome Sri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Minister for Tourism and Culture, Government of India, Honorable Deputy Chief Minister for Tourism, Srimati Prabhati Parida, Honorable MLA Ekamra Bhubaneswar, Sri Babu Singh, Honorable Chief Secretary Odisha, Sri Manoj Ahuja, Commissioner cum Secretary Tourism, Sri Balwant Singh, Director Tourism, Sri Samarth Verma, Senior Advisor FICCI, Mr. Manam Majumdar, distinguished guests from the media, and my colleagues from the industry. A very warm welcome to the Odisha Travel Bazaar. It is truly an honor to have you all here to explore the vibrant tourism potential of Odisha. Odisha Travel Bazaar has been serving as a platform for promoting tourism in the state of Odisha since 2017. It brings together tourism stakeholders, including tour operators, hoteliers, travel agents, travel writers, government officials, to showcase the diverse tourism offerings of Odisha. The Travel Bazaar plays a significant role in boosting tourism in the region and fostering collaboration within this industry and to enhance the overall tourism experience of visitors to Odisha. I am sure you must be inquisitive why Odisha has invited all of you to be here in this Travel Bazaar. The answer is very simple. Odisha is now ready to take a big leap forward in attracting tourists to this wonderful land. After the new ministry has taken place, the government's focus is more on the tourism sector now. Secondly, we have invited your esteemed selves to see the state personally, to interact with its people, interact with the tour operators of Odisha, and to get a taste of the local cuisine and experience the vastness of the tourism potential of the state. I can bet Odisha has more to offer than any individual state in India. Some states of our country boast of the unique advantages
like wildlife, palaces, beaches, backwaters, etc., etc. But Odisha is one state which has most of what other states have to offer. The 480 kilometers coastline, the largest lake in the northern hemisphere, Chilka Lake, Bhitarkanika mangrove forest known as the mini Amazon, wildlife sanctuaries in Simlipal, Satkosia, Debrigad, the 65 tribes of Odisha, the eco-tourist spots in the entire state, the ethnic villages, art, craft, culture, cuisine make Odisha a unique destination for a 21 nights destination. Travel agents, tour operators from all over India are promoting Odisha 2 nights, 3 days, 3 nights, 4 days. ऐसा नहीं होता है. Odisha is a 21 nights destination, sure. And Odisha, although most of you have gone on fam tour to see a small glimpse of the state, I would like to suggest to our Madam Deputy Chief Minister that next year the fam tour should be at least 7 days so that the tour operators can get to see more of Odisha. I'm glad this time my friend Mandeep Singh Soin is here. Captain Swadesh Kumar is here for ecotourism and adventure tourism. They are leaders of the industry. Mandeep is the founder of Ecotourism Society of India, and Captain Swadesh Kumar, who looked like what he's looking now, he was looking same 30 years back when I met him. Being an ex-army, he never goes old. The state, Odisha is a state which I said is a 21 nights destination, not 2 days, 3 nights, Bhubaneswar, Puri, Konark ho gaya to chalo. ऐसा नहीं होता है. The state is free from pollution, congestion, act of terrorism, and proud to set up hospitable people who have vowed to welcome tourists and send back a friend. During your short fam tours, you would get glimpses of tourism potential, but would need at least roughly 21 nights to see our state. I will just touch base on the Buddhist sector, which needs at least 6 nights, 7 days, where with the Buddhist sector you can visit Puri, Konark and other places. The eco-tourist spots are plenty. Madam was mentioning about a place in Koraput in Deomali Hills. When she recently visited, she was surprised to see how strong potential Odisha has. And I think we need all of your help, assistance to boost this state further. Ethnic and rural tourism in Odisha offers a unique immersive experience for travelers looking to explore the rich cultural heritage and the traditions of the region. You have to plan for at least 10 days to see the ethnic villages, the 65 tribes. Just for a tribal tour, you need 65 tribes, largest in India. And these ethnic villages, I think foreigners, we used to have a lot of tourists from Germany, Switzerland, Italy, France, UK, until recently after the COVID, I think that has stopped. Those who are interested, you see, the state government has given 2 days. You had a small fam trip, but those who are wanting to go on an extensive fam trip, even now, I'm sure we would be able to extend our help. The heritage places, tourist places of Odisha offers a captivating journey through the state's architectural marvels, ancient temples, sacred sites, historical monuments, and cultural landmarks. The iconic temples of Konark Sun Temple, Jagannath Temple, Puri, Lingaraj Temple at Bhubaneswar, Mukteshwar Temple, all these splendors, I think to see the architecture of each temple, you will require 3-4 hours. I congratulate the initiatives of our state tourism department under the guidance of Honorable Deputy Chief Minister Srimati Prabhati Parida and her dynamic team in Odisha tourism for aggressively promoting tourism in the state. My friends, our Deputy Chief Minister works from 6 o'clock in the morning practicing her yoga and
working till night 11 o'clock. Such a dynamic lady and such energetic lady is what Odisha tourism needed, and we have her with us. I would like to suggest Odisha tourism to make the fam trip next year for at least 7 nights from next year, so that the invited travel agents and tour operators get little more to see Odisha. I would also like to congratulate FICCI for their efforts in successfully organizing the Odisha Travel Bazaar since last 6 years. Mr. Manish Ahuja, Aisha and Samanda, Mr. Majumdar, I think they deserve a big clap from our side. I encourage the visiting tour operators to grab the opportunity at this Odisha Travel Bazaar, connect with our local tour operators here and take Odisha forward. I have only two small suggestions for Honorable Sri Gajendra Singh Shekhawat ji. Sir, the ministry is doing a wonderful job promoting tourism of India. Sir, in most of the video films of where India is being promoted, we find very little of Odisha. Very little. And in some of the videos which are promoted by the ministry, in some of the videos, Odisha is completely missing. This we would like Honorable Minister to kindly take note. And another invitation for Honorable Union Tourism Minister from the Travel Trade of Odisha is we have an annual tourism conclave. I would like to take this opportunity to, the dates have not been fixed, it will be in May, but I'd like to take this opportunity to invite Minister to come during that period and see a little more of Odisha. And sir, you have very strong tourism background, knowing yourself very well. I'm sure your heart will go to promoting more of Odisha, because abhi tak the ministry has promoted other parts of India very aggressively, and Odisha has been not so much promoted. So we require your help. And apart from Honorable Tourism Minister, I would like to speak 2 lines about Babu Singh, who is Honorable MLA of Ekambro, Bhubaneswar. Mr. Babu Singh is very keenly interested that Bhubaneswar should become a big tourist hub of India. And sir, we can assure you from the industry, we are with you. I would also like to speak about our Chief Secretary, who is equally aggressive and dynamic and takes our ideas and discusses with us and is very keenly interested in promoting tourism. We have a Commissioner cum Secretary Tourism, Mr. Balwant Singh and Mr. Samarth Verma. I think the industry knows them very well. When I told our madam that we had a long meeting where the Secretary wanted to understand the lacunas of the tourism policy for revision of the new tourism policy, he took 5 hours continuously with us. And that's the kind of people this industry needed. Thank you. Thank you, Shri Mahanti. Well, ladies and gentlemen, some of you have taken those fam trips and you would have already gotten some idea about the diverse tourism offerings of Odisha, highlighting its rich cultural heritage and natural beauty. But we have a video that beautifully showcases the tourism potential of Odisha and how it offers something for every traveler. Let's take a look at it. Odisha, not just a place, but a feeling, a land where every journey is a discovery and every experience a story waiting to be told. Here, time bows before devotion. Ancient temples rise from the sands of history, their echoes carried by the sea breeze. Hymns whisper through sacred stones, but the past isn't forgotten. It lives. Boundless horizons, golden shores, tides that heal. Travelers and birds alike find sanctuary
in Odisha's embrace. Sail, serve, soar, Odisha's waters call, and at eco-retreat, luxury and nature come together in perfect harmony. Venture into the wild, where nature roams free, untouched and untamed. Every step is an adventure. Every path leads to water, crafted by hand, woven with tradition. Every piece of art, every brushstroke, every thread, not just souvenirs, but pieces of Odisha's soul. Deep roots, vibrant lives, the guardians of an ancient way of life, where time stands still, yet speaks to tomorrow. A feast of flavors, a taste of love. Savor Odisha's culinary treasures, where each dish tells a story of heritage and warmth. At Nimatran, dine above Puri's blue wave, where every meal is a memory in the making. When dusk falls, Odisha awakens. Music, art, innovation, woven into one. A land where past and future dance as one, where every festival is a celebration of life. Feel the rush. Hear the roar. In India's sports capital, where legends rise and the world watches. With a strategic focus on inbound and domestic tourism, OTB 2025 brings together the world's leading tour operators, travel writers, and bloggers. From heritage trails to adventure gateways, wellness retreat to ecotourism, Odisha is ready to redefine the travel experience. भारत को समझने के लिए ओडिशा एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहां हजारों वर्ष की हमारी हेरिटेज है, हिस्ट्री है, आस्था, आध्यात्म, घने जंगल, पहाड़, समंदर, हर चीज के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। ये राज्य विकास और विरासत का अद्भुत मॉडल है। यहां की 500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन, 33% से ज्यादा का फॉरेस्ट कवर, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म की अनंत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। Some places you visit, others change you forever. Odisha calls. Will you answer? Well, ladies and gentlemen, you just have to come to Odisha and the state will ensure that you fall in love with it. On that note, may I now request Shri Balwant Singh, Commissioner cum Secretary, Tourism Department of Odisha Government, who has been translating into reality the tourism vision of the Odisha Government to shed light on how OTB can play a great role in shaping the future of Odisha tourism through his presentation and address. Honorable Union Minister of Culture and Tourism, Sri Gajendra Singh Shekhawat, Honorable Deputy Chief Minister, Minister of Tourism, WCD and Mission Shakti, Srimati Prabhati Parida, esteemed Chief Secretary Manoj Ahuja sir, dignitaries on the dais, off the dais, dear participant of 6th edition of Odisha Travel Bazaar 25, industry partners, media friends. First and foremost, I would like to express my gratitude to Government of India, especially Ministry of Tourism and our state government for their overwhelming support to our endeavors, especially our new initiative in tourism sector in state, and also all foreign tour operators, domestic tour operators, special invitees for their time and participation for this edition. As we all know, tourism sector performance depends on various multiplayers
especially various government agencies, community, entrepreneur, and lot of externalities. But it is great wealth distributor and job creator, which has to grow in big way. Before I move about my state offerings, I would like to share few trends which has emerged recently in travel sector. Can we run presentation, please? This picture speak a lot. Uh, Rath Yatra, which speaks about travel for divine darshan. So it's about travel. Next, please. This again Bali Yatra picture, which is speaking about our celebration of great maritime history of Odisha, especially travel to Southeast Asia. We celebrate every year, and we want to establish strong relationship with Southeast Asian countries. Next, please. This 25 travel trends, where people are going, what they are asking for, who are they. Next, please. We all, especially industry player here who present here, they know this global top travel trend recently, BBC or Condé Nast Travel magazine. So it's about new area, Kamacation, travel, meet with AI, holiday romance, off beaten track, especially detour destinations, nostalgia travel. These offering, if my state is offering, then we will certainly fit in our requirement. Next, please. Travel companion, still families with children, couple, friends, solo traveler. This is trend of 25. Next, please. Top experiences determining Indian travelers' choice of destination. 63% people are still working with food. 58% culture is deciding destination, weather 57%, and of course community feeling. Next, please. Top factors determining Indian traveler choice of destination: cost of hotels. 65% people decide with this, cost of food and drink, then of course cost of flight. Most important sources for inspiration: 68% more social media is deciding, giving inspiration to travelers. 57% online news or magazines, film and TV 52%. Here, what my state, which offers many experiences and becoming trendsetter, whether it is detour destination or communication or adventure tourism or culinary and food, culture or sports and concert, business leisure, solo travelers, health and wellness. Next, please. So this site speaks about our offbeat destination, Chaucer Jogni in nearby ASI site, beautiful, and especially near Bharat, Bhubaneswar, and especially Ranipur Jhadial in Balangir. Next, please. Stupa, where we got beautiful relic, which is preserved in ASI site museum. Next, this is about Udaygiri. Next, Buddhu, this is Ratnagiri. Next, this is about adventure. We are full of water bodies. You will see next slide. Next, adventure. Next, our outdoor, which is about our sanctuaries, forest life, dolphin, Iravadi, Chilika. Next, this is very special picture. It's a Chilika, migratory birds, millions of number we get. So something is very special in our state, which attract millions of birds from thousands of kilometers. Next, please. Communications, beaches. Next. We are full of water body. You can see in across state, river system, and beaches, which offer very special, especially on slow life, wellness side, opportunity for travelers. Next. This picture is the gorge of Mahanadi, Satkosia, which is a tiger reserve, beaches. Next. Zabar Kai chutney, cuisine on food front, which offers different taste. The endorsement by various celebrities. Next, please. So we offer temple food to tribal culinary. Next, please. Events. So it's about community expressions. Are we call 12-month, 13 festivals. So we offer every season various festival where community participation. Next, please. So art and craft. Our Utkal word came from this land of artistic excellence. So 51 artisan art form we have GI tags. Next, please. Ethnic tribal tourism. Other Mr. Monti was telling 64 indigenous tribes which offer
their own art, their tradition and food, festivals. Next, sports tourism. So we are emerging hub in country on so largest hockey stadium at Raurkela, or we do international sporting event in Bhubaneswar regularly. Next, please. Kamakeshan, our glamping destination on beaches and wildlife sanctuary inside, riverbeds or hill stations. MICE destination, lot of property across state we have. We offer MICE destination conferences opportunity, business leisure opportunity. Solo traveler, we are, as Honorable Prime Minister sir was speaking about 34% forest. Next, please. We are advanced on booking and our website and AI exercises we are doing to be aggressive and competing with our competitors. Next, please. We are working on our 2036 vision when our state will become 100-year-old, and 2047 Vikasit Bharat, where we will offer new products on beach festival or tribal festival. So experiences giving to travelers. Next. So these picture again, this is 2 days back. Again, these turtle came from long travel. So it's very special when birds coming or our guests. So we expect travel from all across the world. Next, please. So thank you so much for joining, and I urge everyone to suggest. We at government level will be open. We will become facilitator, and we expect investors, and we expect better experience in coming days. Thank you so much. Thank you, sir, for that wonderful presentation. Well, ladies and gentlemen, it's now time to hear from some of our valued stakeholders who can provide deeper insights about Odisha's tourism potential through their own experiences. I'll, of course, request them to keep it to 2 to 3 minutes, given the paucity of time. So first of all, please welcome Mr. Gagan Sarangi, Managing Director, Dove Tours Private Limited. A big round of applause as we invite him on stage. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Um, Honorable Union Minister Gajendra Singh Shekhawat ji, Srimati, our Honorable Deputy Chief Minister Pravati Parida Madam, respected Chief Secretary, Secretary Tourism, Director Tourism, and also the FICCI, sir, you. And from the core of my heart, on behalf of the travel trade of Odisha, first and foremost, I would like to extend my sincere gratitude to the government of Odisha and FICCI for doing this for the 6th time consecutively. And this is a wonderful opportunity for us to showcase the travel product of Odisha. And for the first time, I think, I was very excited when I heard that more than 100 people are joining. And domestic buyer 100 and more than 30 overseas buyer, they're coming in a very short notice. So thank you so much to all the delegates for taking your time and coming all the way to attend this event. Thank you very much. Sir, before telling you anything, I'm really privileged and honored for the opportunity given to me to tell something about my experience as a tour operator. My own introduction is, I am an inbound tour operator, sir. I have been working in Odisha, the state I love most. And for the last 25 years, I've been working in this state. I started from Delhi and then come back to Bhubaneswar. And that time, I'll just give you a very small and very important information. Why this is the perfect time to do business in Odisha. The opportunities are so huge. When I started, that time 25 years back, I think we had a lot of challenges. The challenges were so immense because we had the problem with the connectivity, we had very lack of accommodations, and then very few tour operators, those who were working in Odisha, we had the biggest problem how to bring the foreign tourists to Odisha. That was really a challenge. But in the last 10 years, I would say, and if you compare, there has been so much development taking place. And this is a perfect time for collaboration, for the partnership, and for a long time, in fact,
we kept all our secrets hidden from the world. And this is the time now we want to open up. We want to let the people see and explore. And so that's why I request everybody, my tour operator, travel agent, and the overseas buyers, those who are joining this event, I think you'll be very much happy. And some of you already have experienced the fam trip. But just like Mr. J.K. Mahanti told, Orissa is the destination for 21 days. So in 3-4 days, probably this is very difficult to experience everything. And if you ask me why I like Orissa, and probably you'll fall in Orissa once you start promoting tour to Orissa, and if you experience the hospitality of the people, you can see of course, we have the excellent products, starting from the coastline to the mangrove forest, ecotourism destinations, we have got everything. But more than that, the people of Orissa are really very kind. And if you once experience the hospitality of the people, you will fall in love with this destination. So once again, I request everybody, please do include this in your brochure if you have not done so, and help us, collaborate with us. Many of my colleagues, because I have not told you, I am also the chapter chairman for Indian Association of Tour Operator. For the last 12 years, I am taking care of this chapter. And we have members, all the members are really professional, they are good in their business, and this is a wonderful opportunity to have partnership with these people. And please do help us promote our destination. And thank you very much for coming here once again. Thank you, sir. Thank you for the lovely opportunity. Thank you so much, Mr. Sarangi. Now let's welcome Mr. Nitesh Kakkar, Chief Executive Officer, Distinct Destination. Hi, good evening, everyone. Respected guests, good evening. At the outset, I would really like to thank Odisha Tourism and FICCI for this incredible opportunity to experience the beauty and grandeur of Odisha, a state that is truly a treasure trove of history, culture, and heritage. We were part of a special invitee group. The name made us feel very, very important. Extra warm welcome to also a lot of our international guests who are here. Welcome to the state. A little brief, I run Distinct Destinations as CEO. We are primarily into inbound, and we are proud to welcome almost 40,000 international guests into India. And each and every guest of ours wish to experience the richness of India's diverse landscapes. I went around briefly, and honestly, this state has huge, massive potential. To me, it has been a revelation. For our group members also who were with me for the first time, it was indeed a revelation. Warm hospitality, vibrant traditions, breathtaking architecture makes this destination unlike any other. We visited the magnificent Konark Sun Temple, a marvel of ancient craftsmen, to serene beaches along its vast coastline. And, I just heard our Honorable Prime Minister speak about our coastline, and it is indeed incredible. The exquisite Patachitra paintings that tell stories through intricate brushstrokes. Odisha, I experienced it was all about stories. Each and every place you go, there are real stories behind it, and you need people to tell these stories. It is so very important for all of us to expose the state to our international audience. There is undeniable a very positive energy in this state, and I strongly believe this. This decade, to me, will witness a surge in international tourists discovering its many wonders. Odisha is poised to be a game changer, mind my words, in India's tourism landscape, offering visitors an experience that is both enriching and unforgettable. Once again, my deepest thanks to Odisha Tourism, to FICCI, for showcasing the best of this incredible state. We look forward to strengthening partnerships and bringing more global travelers to witness Odisha's magic. Thank you.
Thank you so much, Mr. Kakkar. Well, ladies and gentlemen, Ibn Battuta had once said, traveling, it leaves you speechless and then turns you into a storyteller. For our next experience sharing, please welcome Mr. Dov Kalman, Chief Storyteller, Terra Nova Representation, Israel. Let's welcome him with a big round of applause. Wow. Your Excellency, Honorable Tourism Minister, kind host of Odisha Tourism and FICI, honorable guests, Namaste and Shalom from Israel. To tell you the truth, until a couple of weeks ago, I did not know anything about the existence, actually, of the state of Odisha. If a veteran tourism guy like me did not have a clue, then most probably your potential clients and tour operators around the world have no idea either. You have done a great job in describing this challenge in your own slogan, India's best secret. So maybe I prefer India as the unexplored gem. The trigger of my visit was granted by my personal friend and mentor of India, Mr. Sandeep Dayal, whom I happen to know for 3 decades. We share a common, passionate dream of strengthening the tourism bridge between our 2 great countries, India and Israel. Upon his recommendation, I was honored and privileged to be invited by Odisha Tourism and FICI. And here I'm standing. I didn't know this morning that this is going to happen. So I only got a very first glimpse of your rich heritage today, and great hotels and awesome MICE capabilities. Just look at this. But I had no clue until really I started to understand the huge potential of this state, the nature, the tribes, the soft adventure, the authenticity, the safety, the beach, the warm welcome, and maybe the glamping, the air balloons. Wow. Maybe I add one more thing which I just learned. I mean, for our market, maybe most important, no terrorism. For Israelis now more than ever, what we are searching for is a warm welcome and safety. And it seems that you are ready for that. A few words about myself. I'm the owner of Israel's leading destination marketing company. We represent national tourism boards. We don't sell, we create a bridge between the travel trade and the stakeholders abroad. I just give you one figure. In 2023, out of a population of 9.5 million, that is the population of Israel, 8.7 million trips were made. Right? 9.5, 8.7, how is it possible? Israelis travel like crazy, even during these difficult times. Out of the tourism boards that we represent for 22 years is the Tourism Authority of Thailand. As you probably have noticed, I'm not exactly Thai, but the company was chosen because of our knowledge of the marketing and of our market. So allow me to share just a few figures and keep that in mind when we are talking about the potential of this amazing state. In 2024, 218,000 Israelis visited the kingdom. 281,000. If you compare that to India, the figure is between 50 and 70,000. So times 5. Israel is the #1 per capita market to Thailand. The spending, and here you won't believe me, the spending of the Israelis in Thailand is higher than from any
other source market. Whereas you in India, you still are, your main segments are backpackers and ethnic Israelis who originate, or Jews from Israel who originate from India. So it's low budget relatively to the potential. So what is my proposal? My proposal is, let's meet again next year here. And let me try to prove the point that with the support of the Ministry of Tourism, we can put Israel on the map of your 10 top leading source markets. You have everything needed for our market. And I want to go a step further. I want to propose a holistic marketing approach by allowing local tourism marketing guys to do the work, to do the job. If we succeed here, in getting Israel on the top list, and you will see the number of at least 7 nights that the Israelis will spend here. It's only one stop from here, from Tel Aviv to here, in either Dubai or in Delhi. In Dubai, we have 30 flights a day. So connecting Odisha to Tel Aviv is not a big thing. So let's define Israel as a case study. And if we do succeed, Mr. Minister, then we'll define a next step of getting India to the same level as other destinations mentioned before. So allow me to play around with 2 slogans from less modest marketing guys. Yes, Odisha can. And let's make Odisha greater than ever before. Finally, one last personal request. Please join me in the prayer to all great religions. Tourism instead of hatred and wars. May we all be blessed with peace and prosperity, including the return of all hostages and the end of all hostilities. Thank you so much. Thank you so much for those very encouraging words. And yes, we would love to meet again. All right. On that note, could I now welcome Ms. Kashmira Thakur from Horizon Holidays, Ahmedabad, for her experience sharing. A big round of applause as I welcome her on stage. Good evening, everyone. I am Kashmira Thakur from Horizon Holidays, Ahmedabad, and I am also a chairperson of Women's Empower Committee in ADTI. So once when I had been to Bhubaneswar a couple of times and maybe more than 10 times also to organize a medical conferences here, but we did it, we organized all the conferences in Bhubaneswar. But when I visited on FEM to Eco Retreat or maybe in Puri, I could find out that it's a very good place to organize weddings also. And it's a best wedding destination also. So like in Gujarat, what we have, Kutch nahi dekha to kuch nahi dekha. So it would be in future years that Odisha nahi dekha to kuch nahi dekha. Thank you very much. Thank you so much for that wonderful quote that you said at the end. May I now invite Mr. Timir Baran Patnaik, Managing Director, Nabagunjara Travels Private Limited and President, Odisha Tour Operator Association, to share his experiences. Please welcome with a round of applause. Good evening, dignitaries on the dais and off the dais, and my dear friends, our guests, FTOs and DTOs. My company is about 42 years old. I've been seeing tourism in Odisha really growing, and we are mostly in inbound. I'm here to only request Honorable Minister, Mr. Shekhawat, if you could just activate India Tourism to kindly promote Odisha as they have done for other states.
Like we have seen Gujarat developing, Rajasthan developing, even Kerala develop, because India tourism has taken the lead. If you could kindly, my request is, if you could kindly do that, I think Odisha would be in the forefront. And most of the things have already been told by people. The other request is to, if you could kindly connect our Buddhist, in the regular Buddhist circuit of India, if Odisha could be included, then probably things would be great for us. Thank you. Thank you very much. थैंक यू मिस्टर पटनायक। अब इन एक्सपीरियंसेस में थोड़ा लगाते हैं तड़का और चलिए देखते हैं हमारे सभी के चहीदे सेलिब्रिटी शेफ रणवीर ब्रार का क्या कहना है ओडिशा के व्यंजन हमारे खाने के बारे में। वी हैव अ वीडियो, लेट्स टेक अ लुक। Respected ministers, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय प्रभाती परिड़ा जी, and everybody on the dais, आप सबको जय जगन्नाथ। मैं एक शेफ हूं और मेरे लिए खाने से फूड इज माय लेंस टू द वर्ल्ड एज जैसे, और खाने के जरिए मैं पूरी दुनिया को देखता हूं और मैं बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, बहुत ऑनर्ड और बहुत धन्यवादी हूं आप सबका कि आपने मुझे इस ओकेजन पे बोलने के लिए ये मौका दिया है। क्योंकि जब खाने की बात आती है तो उड़ीसा का खाना, यहाँ के इंग्रेडिएंट्स, यहाँ का खाने के साथ रिलेशनशिप और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के खाने की ऑनेस्ट और सटल सेलिब्रेशन पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। मैं हमेशा से ये मानता था एंड आई एम सो ग्लैड कि उड़ीसा ट्रैवल बाजार हो रहा है और उड़ीसा गवर्नमेंट उस चीज़ को बहुत खूबसूरती से आगे लेके जाना चाहती है। भारत के खाने में और ख़ासतौर उड़ीसा के खाने में अपने आप में इतनी विविधता है कि उस विविधता को हम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट स्केल नहीं कर सकते। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं ये कह रहा हूँ, बट उड़ीसा का ट्राइबल खाना, उड़ीसा के मंदिरों का खाना, जगन्नाथपुरी धाम का महाप्रसाद या फिर वो आम आदमी का पखड़, उन सब में इतनी डिटेल, इतनी लेयरिंग, लेकिन उनके ऊपर इतनी खूबसूरत सादगी है कि ये वक्त है, द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ ओडिशा, द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ द सिंप्लिसिटी, द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ दिस ऑनेस्टी। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि उड़ीसा का खाना, उसकी सिंप्लिसिटी लोगों तक पहुंचे। And I am so glad that initiatives like this allow us to celebrate a state that is divine in every aspect. उड़ीसा का भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, मैं हमेशा से मानता हूं it's a divine offering to the gods and to the soul. And I just hope आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सब जो ये देख रहे हैं, आप उस डिवाइन ऑफरिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे वो महाप्रसाद के रूप में हो, चाहे वो किसी के घर पे खाना खा के हो, या चाहे वो कटक, पुरी, भुवनेश्वर, कहीं पर के स्ट्रीट फूड में हो, दही बड़ा, आलू दम, वो पखड़, या फिर वो आनंदो बाजार का प्रसाद, उस सब में आपको उड़ीसा की सादगी देखने को जरूर मिलेगी। प्लीज डू ट्राई दैट एज अ शेफ, दैट इज ऑल दैट आई कैन रिक्वेस्ट। आई एम श्योर द इवेंट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग सक्सेस। और एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, अपना उड़िया खाने के प्रति जो पैशन है उसको आप तक पहुंचाने का मौका दिया। आई एम just so glad to be associated with a cause so beautiful. Thank you. Thank you so much. Well, he said the world needs more of Odisha and Odisha needs more of ambassadors like that. And for all our foreign tour operators who were trying to understand what he said, the bottom line is, please do not leave Odisha without trying our cuisine. That's it. All right. Moving on, ladies and gentlemen, we have with us today Shri Manoj Ahuja, Chief Secretary, Government of Odisha, the head of the state administration. He's driving endeavor of the state government to make tourism sector more investor friendly by ushering in ease of doing business to foster development. That the tourism sector is a top priority for the state is evident from the fact that the state received investment worth over rupees 8,000 crore in the tourism sector in the recently concluded Utkarsh Odisha Make in Odisha conclave. On that note, may I request Shri Manoj Ahuja to deliver the special address. Namaskar, good evening and welcome to Odisha. Honorable Union Minister, Tourism and Culture, Deputy Chief Minister, Odisha, my colleagues,
Secretary Tourism, Director Tourism, Shri Mahanti, and from FICCI. It's a privilege to have all of you. I want to thank Union Minister for taking time out and being present here to give his insights and suggestions how to take Odisha forward. Also like to thank Deputy Chief Minister as the head of the department. She's been giving very progressive ideas as to how to take tourism forward. And I wanted to thank all of you who are present here for taking time out and being here today in this state with us. You see, Odisha has a plan, and the plan in terms of economic sense is to increase our growth rate, increase our employment, and therein tourism plays a very large role. We feel that we are uniquely placed to leverage and capitalize on this sector to be, which will be a major part of our growth story. You know, Odisha is titled India's best kept secret. We talk about tourism there, but I'll also like to highlight two other areas, and then I like to talk about them. One is that Odisha is also recently that Niti Aayog report on fiscal health came out. It says Odisha also stands first in terms of fiscal health, and I'll tell you why I'm narrating it. Secondly, there's a new government which has come in the state about 9 months back, and the government is committed to certain things, and one of the things is this government means business. And I like to kind of, relate it to the even today. First is, while all of us are sitting here, I was very happy to hear that a friend from Israel mentioning that he'd like to come back after a year and he'd like to put tourism from Israel to Odisha on a much, much broader scale or a larger scale. And I think that's my request to all of you today. When all of you are here, my request is do challenge yourself, and what in your own way. Maybe you have a hotel, maybe you are a tour operator outside the state, you are a tour operator inside the state, maybe you're planning to invest here. What exactly can you do or you want to do? Maybe if you're a tour operator, you have 100 guests, tourists coming from outside. Do you have plans can you take it to 500? Can you take it to 10,000, 1,000? If so, what is it that you exactly are looking for? I'm sure when we look around, when you look at people, let's say, they have a wide choice in front of them. Some may say, I want to go to the Taj Mahal. Somebody would say, I want to go to Rajasthan, maybe down south in Kerala, where they have packages. So why would somebody come to Odisha? So when you're thinking about it, we want that tourism would grow when all of you grow, which means that all of you, if you have plans for Odisha, you'll have to scale it up a little bit and let us know what is it that is preventing you from getting those people. I'm sure we've talked about a lot of potential we have. We take that as a given. We take the default advantage which is there, which is available. So if you can, and this is an exercise which I'd like to give you, and I'll request our secretary also to kindly note down, just think through it, that if you have to double, triple, or increase your presence here in Odisha 5 times, what exactly is it that is missing? And let us know. We'll collate it. And when I said the second part, best kept secret, is we mean business, we'll act on it. You see, we have policies, we have a lot of commitments, we have discussed a lot of things, but I think this is a time for action. And that means we have to get down into fundamentals. If you want to set up a wedding destination here, why would somebody come here, not go somewhere else? I mean, these are the questions we need to answer. And they could be many. Second, we are very, very broad in our approach. While we have specific sectors and specific benefits, I think there are a lot of areas which are open now. And we would like to push on all sectors. It could be promoting our existing places, let's say Chilka. When we see Kerala has so many houseboats we don't have. How can we do that? Maybe certain basic standard of facilities around Chilka. How can we do that? For you, when you get tourists,
what are they looking for, what is missing. I think all that would help. So, and the government is very keen to invest. When I mentioned one of our secrets is that we are number one in the fiscal health index of India, is that we have the resources. And we also understand that we have to make commitments, we have to put in. I mean, there may be issues like, you know, the chicken and egg kind of a thing. Why would people come? Maybe there's a lack of infrastructure somewhere, connectivity is very poor, things are there, or we don't have suitable policies which make it viable for you to operate. So which means viability gap funding, but it will be precisely addressed to your economic needs. The fact that it is unviable, yes, we can give that. Fact that you need a policy to have more hotel rooms, yes. If we have airports and all which are linked to areas where people go to, we are willing to invest in that. And that is that commitment which this government has. So if you can give it to us, we'll start acting on it. So that one day down the line, when you come back, we should be able to see the result of this conference today. And that's what our commitment is. And we would like to move forward at a very, very faster rate than we have been doing. We have the wherewithal, and if we can't do it, I think we have ourselves to collectively take the blame why we haven't done it. Given that we understand that the huge potential is there across sectors, which my friends mentioned, the speakers who are there mentioned. So I think let us collectively work as a team. And we also have a fundamental premise, if the tourism improves, it's going to be because of the private sector investment there. The government's role is kind of limited, like I said, infrastructure policies and all, which we'll be very aggressive, and we will do that. The other areas which are come to my mind, I think we have to be futuristic. We understand what are the needs of this generation, what are they looking forward. Is it the traditional kind of tourism or experiential or things like that, which you would be much more clued. And I think let's keep that also in view. The coming decade, the coming 6-7 years, what are the kind of tourists who would come here? How do we plan for that? How do we put things here? And then obviously the interrelationship. I mean, things are growing. Honorable Union Minister, who is also the Minister for Culture, was mentioning that there is excavation going on in Ratnagiri, Lalitgiri, Buddhist sites. And they've taken out, you know, big sculptures of the head, Lord Buddha's head, which is coming out. So there's a very rich Buddhist tradition here. There is so much here. Temple tourism, you talk about, you know, anything, ecotourism. There's so many things which are available here, around which a story, like you said, if people are coming for 3 years, how can we ask them to stay for 10 days? I mean, for 3 days, how do we ask them for 4 days, 5 days, 6 days? That'll come when we link up everything. So that when people, maybe health tourism, we have good quality medical infrastructure, if they can come, can we link it up to other things and all that? I think these are some areas. And the last one thing which is there on my mind is about our seasonality. While the climate is good for 3-4 months, the other months it is not so good. So we have to work out systems for that. How do we ensure that people come out throughout the year and the infrastructure you have doesn't kind of not cater to people, is not used? I think these are just some of the thoughts in my mind. But basically what we are saying is the government means business. We are committed to investing and making the activity viable to you. And that's why you're the best people who know why people don't come and how do we increase that. And that is why I had requested, if you just, when you're here, take some time out on a piece of paper, just write 5 or 6 major things which you think will actually make a difference, and make a commitment. You say that I can double, triple, make it 5 times, and we'll work on those requirements. That's a commitment to you. We look forward to working together. And the next year, when we come back, we can look back in satisfaction and say that we did this and we made it happen on the ground. Thank you so much. Thank you so much, sir. Well, ladies and gentlemen, as you know, Odisha is a land of stories, of ancient temples, breathtaking landscape, vibrant festival, and incredible wildlife. Today, we invite you to embark on a journey to explore this magical land in the most exciting way possible through the Explore Odisha Quiz Challenge. And if you win, you also stand a chance to win luxury glamping stays, curated tours, dining vouchers, cash prizes, and even all expenses paid travel holiday. So I would now request Honorable Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Shekhawat ji, and Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Srimati Pravati Parida, to launch the Explore Odisha Quiz, Challenge Yourself and Win. Odisha, a land of culture, nature, and adventure.
How well do you really know it? Take the Explore Odisha quiz and test your knowledge. Get the answers right and stand a chance to win exclusive experiences. Log on to Odisha Tourism website. Go to Explore Odisha quiz page. Click on Ready to Play. Explore, engage, experience. Odisha is calling. All right, ready to play. Step up, guys. Take the challenge and tell us how well you know Odisha. Moving on, ladies and gentlemen, under the vibrant leadership of Honorable Deputy Chief Minister Srimati Prabhati Parida, also the Tourism Minister of Odisha, the state tourism has received a renewed focus to strengthen infrastructure, bring in investors for hospitality sector, and develop key and niche segments and products. She actively monitors implementation of initiative to mount brand building campaigns, as well as special plans for homestays, encouragement for travelers with focus on increase in safety and security for women tourists, which are all a part of the slew of measures the government is rolling out to make Odisha one of the leading destinations for domestic and foreign tourists. As she leads the way to elevate Odisha's status as a premier global travel destination today, may I now humbly request her to address this wonderful gathering. Please welcome her with a huge round of applause. जय जगन्नाथ षष्ठ ओडिशा ट्राभेल बजार रो शुभ उद्घाटन उत्सव रे मंचासीन केंद्र रो पर्यटन संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत महोदय, ओडिशा रो मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा महोदय, पर्यटन विभाग रो कमिश्नर श्री बलवंत सिंह महोदय, पर्यटन विभाग रो निर्देशक श्री समर्थ वर्मा महोदय, सुस्ती ग्रुप रो सीएमडी तथा फिकी रो टूरिज्म कमिटी रो को चेयरपर्सन आम समस्त पाखे जनाशुना डॉक्टर जेके महांती महोदय, फिकी रो वरिष्ठ उपदेष्टा श्री मानव मजुमदार महोदय, उपस्थित पर्यटन विभाग रो ओ फिकी रो समस्त अधिकारी माने, मो सामने उपस्थित होटलियर्स, इन्वेस्टर्स, कंसल्टेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, एठी उपस्थित थिबा समस्त मान्यगण्य अतिथि माने, विभिन्न टूरिज्म रो विभिन्न सेक्टर को रिप्रेजेंट करुथिबा समस्त बंधु माने, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट्स मीडिया रो बंधु माने एवं विभिन्न प्रांतरु टूरिज्म रे आशा आग्रह व्यवसाय कैरियर करुथिबा समस्त बंधु मानंकु ओडिशा ट्रैवल बाजार रे मो स्वागत करुछि। बंधु माने हम सब ने देश की प्रधानमंत्री के वार्तालाप सुने कि ओडिशा में विकास और विरासत की अच्छा मॉडल है। ये ओडिशा ऐसे हैं जहाँ पे नेचर भी है, हेरिटेज भी है, लाइफ लाइन्स भी है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए ओडिशा से अच्छा प्लेस एक बहन ने बोला यहाँ हो नहीं सकता, ओडिशा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो मुझे लगती है कि जितने जैसे डॉक्टर गगन सरंगी ने बोले
नितेश काकर जी बोले, डॉव कलमान जी बोले, काश्मीरा थाकेर जी बोले, तामिर बैरन पटनायक ने बोले और रणवीर ब्रार ने उड़ीसा के खाने के लिए बोले। मैं सिर्फ 2-4 शब्द कहने के लिए आपके पास खड़ी हूं कि उड़ीसा के पास हम सब बोले, आप जो देख के आए वो भी बोले कि वी हैव द 500 kilometers coastline, we have the highest water lake like Chilika. We have in 3 months, we have 10 lakhs birds coming from different parts of the world to that place. And now Mangla Jodi is going to be a bird museum there to store the bird's voice and bird's story. If we have everything, we have is for spiritual tourism, we have Prabhu Lord Jagannath, we have one chariot jatra, जहाँ पे हम लोग ने एक दिन में 15 लाख लोगों को एक छोटे शहर में हॉस्पिटैलिटी देते हैं। मतलब जैसे बोले कि उड़ीसा अभी टेरर नहीं है, अभी टूरिज्म में ही प्राधान्य देना है। हमारी पास भीतरकनिका भी है, टॉर्टोइस भी है, हमारी पास सिमलेपाल भी है। हम हीराकुद एक बड़ा रिवर फ्रंट बनाने जा रही हैं। हम कोलाब के पास, सत्तीगुड़ा के पास, मतलब कोरापुट और मालकानगिरी में मैं जब घूम के आई तभी देखी कि आंध्रा में एक छोटा सा प्लेस में आंध्रा कॉफी का म्यूजियम बना के जितना रोजगार कर रही हैं, हमारे पास इतना बड़े कॉफी बागान है। और मैंने देखा, बोला कि कॉफी का क्वालिटी क्या वहाँ हमारी अच्छा है कि वहाँ अच्छा है। तो मुझे कॉफी बोर्ड के लोगों बोले कि हमारे पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कॉफी है, क्योंकि हम सीड प्रमोट कर रही हैं, इसलिए हम लोग बाहर से लोगों को वहां अंदर आने नहीं देते। लेकिन ये दिखने में भी सुंदर कोरापुट की कॉफी है। शायद जिस टाइम था, हमने जो उड़ीसा की सुंदरता है, उड़ीसा के पास जो पोटेंशियलिटीज है, हम शायद वर्ल्ड मार्केट में इसको शो नहीं कर पाए। बट दिस इज द टाइम यू हियर द वॉइस ऑफ our secretary, our director, and the chief secretary of Odisha, and you must feel that government is talking in one line कि this is the time we now open the mind to develop in tourism and accept the private sectors to do business in Odisha. So I hope you all, those who have visited many places, if you will go any district, मुझे यूनियन मिनिस्टर बता रहे थे कि आपके पास क्या मिठाई है। भाई साहब, हमारे पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मिठाई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। आप अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी निमापड़ा में जाए तो छेना झिली के लिए ये भी बहुत फेमस है। लेकिन शायद हम लोग उड़ीसा के छेना पोड़ो दूसरा कहाँ नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और जितने मिठाई हमारी भद्रक में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, खान पान बड़े अलग से है। और मुझे लगती है कि उड़ीसा के लोग हमारी विरासत, हेरिटेज में जितना रुचि रखते थे, नेचर में जितना रुचि रखते थे, खान पान में भी उससे अधिक ध्यान रखते थे। इसलिए एक घर में जितना खाना बनाते हैं, कभी कभी भैया अगर हमारी यहाँ पहली बार जमाई घर आते हैं तो इतना व्यंजन घर में बनाते हैं, माने माँ और भाभी ने, तो 100 से ज्यादा हो जाती है, वो न्यूज चैनल में आ जाती है। तो अभी हमारे पास मुझे लगती है कि
देश की प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि उड़ीसा के पास सब कुछ है। आप लोग ने जो वर्ल्ड का टूरिस्ट है, टूर ऑपरेटर्स हो या आपका काम, प्रोफेशन, कैरियर, ये टूरिज्म को बेस करके हैं। चाहे आप बड़े होटेलियर हो या टूर ऑपरेटर्स हो या आप माइस टूरिज्म में बिलीव करो या रिलीजियस टूरिज्म में, आप नेचर टूरिज्म में आइए या हेल्थ टूरिज्म में आइए, अब जिस टाइप का आती है, मुझे लगती है कि उड़ीसा किसी को भी ऐसे हाथ खाली करके जाने नहीं देगी। जो भी आएगी, जिस टाइप का, जैसे माइस टूरिज्म से लेके फूड टूरिज्म तक, उड़ीसा के पास सब कुछ है। मुझे लगती है जैसे आज हमने क्विज शुरू किए हैं, सबसे बड़ा चीज हमारी सरकार के पास एक है कि हम चेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चाहे हमारी टैगलाइन हो, चाहे हमारी पॉलिसी हो, चाहे हमारी प्लेस जहां आप घूम के आई हैं, अगर कुछ सजेशन आप हमको दे सके कि दीज आर द फ्यू थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड, मुझे लगती है कि तुरंत अगर कोई काम पे आएगा तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ही आएगी, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट ट्यून पे है कि उड़ीसा में जो अपार संभावना है उसको कैसे हम ले जाए। चाहे ग्लोबल मार्केट हो, हमारी नेशनल मार्केट हो, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, जो भी आए वो देख के खुशी से जाए और 2-3 और बोले। मुझे भाई साहब बता रहे थे कि कोई एक दिन रुके तो जितना बिजनेस नहीं आएगा, अगर एक रात रुक जाए तो 1.5 गुना बिजनेस आ जाएगा। तो मुझे लगती है कि आप सबने उड़ीसा को देखा, उड़ीसा के खाना, उड़ीसा के क्लॉथिंग्स, उड़ीसा के हैंडलूम्स, उड़ीसा के हैंडीक्राफ्ट्स, उड़ीसा का डांस, जो भी आप देखेंगे, उड़ीसा का जिस पन्ना आप खोलेंगे इसमें टूरिज्म आ सकता है। तो मुझे लगती है कि आप सब ने उड़ीसा ट्रैवल बाजार को आए, इसलिए मंत्री के नाते मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि जो प्रयास हम लोग किए हैं उसको आप लोगों को ही संभालना है, क्योंकि सरकार तो पॉलिसी बनाएगी लेकिन बिजनेस तो आप लोगों को करना है। मुझे याद है उत्कर्ष ओडिशा में जब हमारे पास 8,000 करोड़ से ज्यादा प्रपोजल आया था, तो एक जो मेरे बगल में बैठे थे वो बोले कि अगर उड़ीसा थाली ऐसे परोसे सजाए तो हम खाने वाले लेके आएंगे। तो मुझे लगती है अभी हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं आपके साथ मिलके कि उड़ीसा का, चाहे ये गांव की मंदिर है या भव्य प्रभु श्री जगन्नाथ की मंदिर हो या यूनेस्को साइड कोणार्क हो, जहां पे जाइए हम मोदी जी के बातों से, मोदी जी एक बार हमको बोले थे कि छोटे छोटे जो स्मॉल चेंजेस कैन चेंज द टूरिज्म एज ए होल। अगर छोटे छोटे हम चेंज करते जाएं तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चेंज लोगों को सामने आ जाएगी। तो मुझे लगती है कि आप लोगों के एक्सपीरियंस, यूनियन मिनिस्टर का एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो एक हेरिटेज स्टेट से नहीं, वो खुद एक विरासत चलाने वाले हैं। लेकिन उड़ीसा में या वर्ल्ड में आप लोग जो घूम रहे हैं, अभी एक एक के पास बड़ी खजाना होगी वो अनुभव की। मुझे लगती है उड़ीसा को आप इस अनुभव से क्या चेंज करने से उड़ीसा टूरिज्म की बाजार की नजर पे आ जाएगी, क्या क्या स्मॉल चेंजेस लाने से उड़ीसा की
इतना सुंदर चीज, चाहे नेचर हो, हैंडलूम्स हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, हमने एक हैंडलूम्स गांव बना के रखे हैं। एक भाई साहब आज जाके आए हैं रघुराजपुर, एक पटचित्र की एक विलेज है जहां घर घर में लोग शिल्पी है। इतना कल्चरली स्पिरिचुअली रिच स्टेट को अगर हम सामने इतने एक्सपर्ट लोग बैठ के 2 दिन चर्चा करके बढ़ा नहीं पाएंगे तो हम सोच लेंगे कि जगन्नाथ ही माने जगन्नाथ की भरोसे ही जीना है। क्योंकि इतना एक्सपर्ट के पास कुछ तो तरीका होगा कि हाउ टू पोज ओडिशा इन ग्लोबल मार्केट, हाउ टू अट्रैक्ट ग्लोबल टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट, मतलब इसराइल से आ सकती हैं, जापान से आ सकती हैं। बुद्धिस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है तो जापान श्रीलंका से भी ज्यादातर लोग आ सकती हैं। तो हमारी मैरीटाइम अगर देखें तो उड़ीसा की मैरीटाइम हिस्ट्री मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई स्टेट के साथ है। अगर उड़ीसा के पास इतने सारी है और सेलर आप लोग हैं तो बिकना चाहिए। तो मुझे लगती है कि ये जो ओडिशा ट्रैवल बाजार, मुझे आते आते एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ट्रैवल बाजार लगा रही हैं और उसका नाम ट्रैवल बाजार है और ये मे फेयर के कॉन्क्लेव में क्यों है, वो बाजार में क्यों नहीं दिखा? तो मैंने बोला कि आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि कुछ हीरे जैसी होती हैं वो बाहर सेल नहीं किया जाता। हमारी टूरिज्म ऐसा अनमोल चीज है जो जितना एक्सपर्ट है, जो समझ पाएंगे उनको हम दिखाएंगे। इसलिए हम ये कन्वेंशन हॉल को ही चुना। मुझे लगती है कि आप लोगों का जो 2-3 दिन आप घूमेंगे ओडिशा, यहाँ रुकेंगे, मतलब मोबाइल में आप फिर अपनी जगह का ढूंढेंगे नहीं, ओडिशा के लिए सोचेंगे, ओडिशा के लिए सजेशन देंगे और ओडिशा टूरिज्म कैसे बढ़ेगी इसके ऊपर ओडिशा टूरिज्म डिपार्टमेंट को जरूर सजेस्ट करना। अगर आपको लगती है कि बार बार देने के बाद आपके सजेशन का जो जिसके पास इतना अनुभव होती है उनको लगती है कि बार बार देने के बाद वो लोग कदर नहीं करते, इसलिए हम नहीं देते। मैं आपको आश्वस्त करती हूं मंत्री के नाते कि आप एक एक सुझाव का ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर जो सही लगा फिर आपको इन्फॉर्म करके ही इधर हम लोग काम पे लगेंगे। क्योंकि हम लोग चाहे ऑफिशियल्स हो या मिनिस्ट्री हो या चीफ मिनिस्टर, सब लोग चाहते हैं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारी डायरेक्टर और नीचे तक सब लोग चाहते हैं कि ओडिशा में टूरिज्म बढ़ेगी, तभी एम्प्लॉयमेंट आएगी, अर्थनैतिक व्यवस्था में सुधार आएगी, फिर हमको एक विकसित ओडिशा बनने में कोई रोक नहीं सका। तो मुझे लगती है कि आपके सबके साथ मिलके ओडिशा को टूरिज्म पे 1 नंबर पे आने के लिए आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आज ऐसे 2-4 दिन तो दे रही हैं, लेकिन लोगों को आइडिया कब आता है? मुझे लगती है जब लोग नहाते हैं उस टाइम सब गाना आते हैं, और जितना साइंटिस्ट को हमने देखा पढ़ा वो सब जब फ्री टाइम पे होते हैं तब आइडिया आती है। तो आप जरूर आपके फ्री टाइम ओडिशा टूरिज्म के लिए इन्वेस्ट करने की मेरी रिक्वेस्ट है। सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और यहाँ आपके भागीदारी देने के लिए। थैंक यू। मैडम के प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड लेट मी इन्फॉर्म दिस वंडरफुल ऑडियंस दैट शी इज आल्सो द फर्स्ट वुमन टू हैव बिकम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। All right, ladies and gentlemen, some time back our Israeli friend had said that, you know, the tagline for Odisha should not be India's best kept secret. It should be
unexplored gem. In fact, Odisha is more than a hidden gem today. It has stepped into the spotlight, ready to share its rich heritage, breathtaking landscape, and vibrant tradition to the world. And as we embrace a new era of tourism, Odisha is reimagining its identity not just as a place to visit, but as an experience to be cherished. So today we invite you, all creative minds, to play a pivotal role in this journey by crafting a tagline that encapsulates Odisha's spirit and vision. Your ideas will shape the future of Odisha tourism. So I'll request Honorable Minister of Tourism and Culture, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, and Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, Srimati Pravati Parida, to launch the Odisha Tourism Tagline Competition. Let your words ignite Odisha's magic. Craft a 6-word slogan that dazzles. Pair it with a 100-word vision for a chance to win 1 lakh rupees. Shape Odisha's global identity. Log on to Odisha Tourism website. Go to Odisha Tourism tagline contest page. Click on Participate Now. Submit your masterpiece today. All right, so put your creative minds to work, ladies and gentlemen. Well, ladies and gentlemen, it's indeed our privilege to have with us Honorable Union Minister of Tourism and Culture, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, who is leading the transformative strides India's tourism sector is taking to develop infrastructure and build projects. I'll request him to now address the gathering. Thank you so much. ओडिशा ट्रैवल बाजार के इस छठे संस्करण में जब हम इस क्राफ्ट, कल्चर, क्यूजीन एंड नेचर इन चारों की समृद्ध धरती उड़ीसा के टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने और भारत और विश्व के मानचित्र पर उड़ीसा का टूरिज्म किस तरह से प्रमुखता के साथ में आए, इस लक्ष्य को लेकर के एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब अमृत मंथन के प्रतीक के रूप में देश में कुंभ दुनिया का सबसे बड़े उत्सव के रूप में संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है, हम सब यहां उड़ीसा के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने, टू ग्रो टूरिज्म इन स्टेट ऑफ उड़ीसा, हम जो महाकुंभ में मंथन का महाकुंभ करने के लिए जब यहां 3 दिन के लिए एकत्रित आए हैं, इस महत्वपूर्ण संवाद के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिनके सक्षम नेतृत्व में, जिनकी ऊर्जा का मैं अभिनंदन करता हूं, ऐसे उड़ीसा प्रदेश की सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय पार्वती परिदा जी, मंच पर उपस्थित ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज आहूजा जी, सेक्रेटरी टूरिज्म श्री बलवंत सिंह जी, डायरेक्टर टूरिज्म एंड यंग एंड एनर्जेटिक ऑफिसर मिस्टर समर्थ, होटल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन्होंने विस्तार से उड़ीसा की बात हम सबके सामने रखी, आदरणीय श्री जेके मोहंती साहब, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के रूप में यहां उपस्थित आदरणीय मानव मजूमदार जी, इस अमृत मंथन में हिस्सा लेने के लिए आए सभी एफटीओज, डीटीओज, और यदि मैं कहूं कि मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे हुए मेरे सारे टूरिज्म परिवार के सम्मानित सदस्यगण, मैं उड़ीसा सरकार का
सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी का और फिक्की का दोनों का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। अभिनंदन करना चाहता हूं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर प्रदान करने के लिए। मित्रों, आप सबके बीच में उपस्थित होना निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय है। जैसा सभी वक्ताओं ने अभी अपनी चर्चा में कहा कि उड़ीसा न केवल अपनी पुरानी सभ्यता, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंश भी यहां हम सब लोगों ने देखे, अपनी समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों के चलते हुए अपनी विरासत और अपनी ऐतिहासिक इमारतों के अस्तित्व के चलते हुए, अपने विश्वविख्यात मंदिरों के पूजा स्थलों के चलते हुए, अपितु यहां की अपूर्व प्राकृतिक संपदा और समृद्ध संस्कृति के चलते हुए एक विशिष्ट पहचान पूरे विश्व भर में रखता है। यहां का समृद्ध इतिहास, यहां की कला, यहां का संगीत, यहां का नृत्य, यहां का कल्चर, क्राफ्ट, क्यूजीन, कॉस्ट्यूम, यह अपने आप में एक वैशिष्ट्य इस प्रदेश को, एक सुंदरता इस प्रदेश को ऐसा प्रदान करती है। उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जहां आकर के कोई भी भारतीय अपने आप को भारतीय होने पर, भारतीय कहलाने पर, अपनी जड़ों के साथ में जुड़ करके, अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ में जुड़ करके अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व महसूस कर सकता है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से प्रगति की है, द स्पीड एंड स्केल ऑन विच इंडिया हैव डेवलप्ड इन लास्ट 10 years time, the perspective to look towards India has changed for the rest of the world. जिस गति के साथ में भारत ने प्रगति की और इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करके, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का के गैप्स जिनको आइडेंटिफाई करके प्लग इन करने के लिए काम पिछले 10 साल में हुआ, 1,50,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें भारत में बनी, एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने, देश का लगभग पूरा रेलवे नेटवर्क जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। लगभग 100 के आसपास में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन आज भारत में चल रही हैं। हवाई अड्डों की संख्या जो है वो 75 के आसपास हुआ करती थी, वो बढ़कर के आज 157 तक पहुंच गई है। कम्यूटेशन और कम्युनिकेशन, इन दोनों में क्रांति भारत ने पिछले 10 साल में देखी है। और किसी भी देश में टूरिज्म को ग्रो करने के लिए जो पहली आवश्यकता है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच इज एसेंशियल इज द कम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क हैज टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। ये जो गैप भारत में सबसे बड़ा था, उस गैप को प्लग इन करने में, उस गैप को ब्रिज इन करने का काम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके चलते हुए आज देश में टूरिज्म सेक्टर जिस तरह से ग्रो कर रहा है, यहां इनबाउंड टूरिज्म को पे काम करने वाले एफटीओज और डीटीओ दोनों तरह के लोग यहां बैठे। कोविड की आपदा के पहले 2019 का साल दुनिया के लिए टूरिज्म का सर्वश्रेष्ठ साल ऐसा माना गया था, भारत के लिए भी था। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने 2019 और 2020 और 21 की उस टूरिज्म के दृष्टिकोण से वो जो ग्रहण की रात्रि थी, उसकी समाप्ति के बाद में दुनिया ने जिस तरह से रिवेंज टूरिज्म का युग देखा है, ग्लोबली टूरिज्म जिस तरह से बाउंस बैक हुआ, अगर हम भारत के आंकड़ों को देखें इनबाउंड टूरिज्म के दृष्टिकोण से, तो शायद हमको कुछ थोड़ी हल्की निराशा हो सकती है कि हम उस मुकाम तक आज भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन गहनता के साथ में अध्ययन करके उसका यदि कोई निष्कर्ष निचोड़ निकाले, तो भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल पिछले 2 साल में बहुत तेज गति के साथ में बढ़ा है।
एक जबरदस्त बाउंस उसमें देखने को मिला है। और भारत का टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ने के कारण से हमारा जो इनबाउंड टूरिज्म जो वापस रिट्राइव हम कर सकते तो उस कैपेसिटी को हमने उसके कारण से एल्बो आउट करके इंडिया जो है फॉरेन टूरिस्ट को एल्बो आउट उसके कारण से किया है। आज जब हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, पूरी दुनिया के जो टॉप 15 कंट्रीज जो हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर एक साल में कहीं जाता है तो वो फ्रांस में जाता है। 100 मिलियन का मार्क पिछले 2023 में उन्होंने टच किया। स्पेन दूसरे नंबर पर होगा, शायद 85 मिलियन के आसपास में कहीं खड़ा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे नंबर पर होगा, 60-65 मिलियन के आसपास होगा। वहां से लेकर के टॉप 15 कंट्रीज, एक यूनाइटेड स्टेट्स को अगर अलग कर दिया जाए, उन बाकी 14 देशों के पास में अपना डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल जो है वो बहुत छोटा है। चाहे वो सऊदी अरबिया नीचे 15वें नंबर पर होगा और चाहे ग्रीस और स्पेन होगा, उनका डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। जबकि भारत में हमारे पास में अपार संभावना है। उसके कारण से एक तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया। और आज पूरी दुनिया जिस दृष्टिकोण से भारत की तरफ देख रही है और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ देख रही है, हमारी इकोनॉमी ने पिछले 7 साल में 2 ट्रिलियन से बढ़कर के 4 ट्रिलियन पर हमारी इकोनॉमी पहुंची है। और 10 साल की इस यात्रा में जब सरकार ने जिस लक्ष्य के साथ में काम किया, इकोनॉमी की ग्रोथ के चलते हुए आज जहां दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत होने के साथ साथ में डावोस में इस वर्ष और पिछले वर्ष भी सारी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत की इकोनॉमी इसी गति के साथ में हर 7वें साल में दुगनी, हर छठे 7वें साल में दुगनी होती रहेगी। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हम 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पे पहुंचे, तब हमारे यहां 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन गई, एक्सप्रेस बस बन गए, हाईवे बन गए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, वंदे भारत ट्रेन आ गई, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स दुगने हो गए, नंबर ऑफ वाटरवेज 0 से बढ़कर के जो है 10x 20x मल्टीप्लाई हो गए। अगले 7 साल में हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन पर हो जाएगी। और जो विकसित भारत बनाने की संकल्पना लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं कि हम 2047 तक, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। तब तक भारत की इकोनॉमी 4 बार फ्लिप होकर के और जो है 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन, 30-32 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी। जब 2 से 4 हुए तब हवाई अड्डों की संख्या 75 से 150 हुई, और जब 4 से 32 होगी तब भारत की संभावनाएं, भारत में संभावनाएं क्या होगी, इसकी कल्पना करना अपने आप में जो है हम सब लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। भारत में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने बुनियादी आवश्यकताओं से जूझने वाले समाज को उन आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, और उन प्रयासों के चलते हुए भारत का जो मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ा है, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा पार करके आज मध्यम वर्ग की जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। और उसके चलते हुए ये जो एस्पायरेशनल क्लास है, जो पहली बार जिसके जेब में डिस्पेंसिबल इनकम आई है, देखिए भारत में डीएनए टूरिज्म, भारत में के डीएनए में है। भारतवासी पहली बार जब दुनिया में 2500 साल पहले, जब दुनिया, अमेरिका तो अस्तित्व में नहीं था, यूरोप के देश जब ब्रॉन्ज एरा में एंटर कर रहे थे आज से 2500 साल पहले, तब भी भारत में केरल से एक नंबूदरी ब्राह्मण पैदल पैदल चलता है और वो जाकर के केदारनाथ में जाकर के एक भगवान के मंदिर का पुनरुद्धार कर देता है। ये भारत के डीएनए में था। ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। ये जो भारत में लोगों की क्षमता बढ़ी है, लोगों के पास में डिस्पेंसिबल इनकम आई है, वो घर से बाहर निकल करके जाने लगते हैं। तब जहां फ्रांस में पूरे साल भर में जितने लोग जाते हैं उसका 1.25 लोग, 9 करोड़ लोग फ्रांस में जाते हैं, और 13 करोड़ लोग पिछले 1 साल में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच जाते हैं। 65 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। और ऐसा केवल एक भगवान रामलला का स्थान नहीं है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में एवरेज फुटफॉल ऑफ उज्जैन जो है, वीकली एवरेज इज मोर देन 3 lakhs। 11-12 करोड़ लोग हर साल उज्जैन में जा रहे।
लगभग 10 करोड़ लोग हर साल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भगवान काशी बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 6 करोड़ लोग जो है तिरुपति में तिरुमला देवस्थानम में जाकर के भगवान तिरुपति वेंकटेश को वहां आराधना करने के लिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में किसी के पास ये क्षमता नहीं। लेकिन इससे भी आगे बढ़ करके देयर इज ए पैराडिम शिफ्ट which has been observed post COVID to look towards life. And people have now started, it's not only in India, it's all around the world. People have now started looking towards life with a new perspective, that is they wish to experience more and more life because उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा है। ऐसी परिस्थिति में जब लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसको जैन जी कहते हैं, उनके लिए अभी एक स्टडी आई है कि ग्लोबली भी और हिंदुस्तान में भी ऑलमोस्ट इक्वल है। 60% ऑफ दैट देयर प्रीफरेंसेस फॉर द टूरिज्म इज टू एक्सपीरियंस समथिंग। अब जब हम एक्सपीरियंस की बात करें तब कोई अगर हम सोचें, मैं उदाहरण देकर के कहता हूं कि अगर हमारा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारे लिए दर्शन का कारण हो सकता है, हम एक बार वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन कोणार्क के सूर्य मंदिर पे आने वाले ट्रैवलर को हम एक दिन एक्स्ट्रा कैसे रोकें, उसके लिए हमको वहां पे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। वो एक्सपीरियंस अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो 1+1 नाइट में जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा टूरिज्म पोटेंशियल वहां डबल हो जाएगा। हमारे पास में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। अभी टूरिज्म सेक्रेटरी बता रहे थे कि वेटलैंड्स हैं, इन्होंने नक्शे पर दिखाया, इतने सारे वेटलैंड्स हैं, इतनी सारी रामसर साइट्स हैं। लेकिन उन सब जगहों पर हम उसको एक्सपीरियंस क्या ऑफर कर रहे हैं टूरिस्ट को, इसके ऊपर हमको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। और ऐसे समय में सरकार, जब मैं देखता हूं कि पूरे देश भर में कट थ्रोट कंपटीशन हर स्टेट में टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म पोटेंशियल को हार्नेस करने की दृष्टिकोण से चल रहा है। आज से 5 साल पहले हिंदुस्तान में अगर किसी ने इस तरह का जो है ट्रैवल बाजार किया होता किसी स्टेट में, इससे 1/3 लोग भी नहीं होते। ये इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल इतना बड़ा सामने खड़ा है, इसलिए इतने सारे सब लोग आपके आमंत्रण पर यहां आए। लेकिन हमको उसके अनुरूप जो है अपने ऑफरिंग्स को, अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स को भी उसके साथ साथ में बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर के रूप में टूरिज्म प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं। मे बी होटल चलाने वाले लोग होंगे, कुछ दूसरे और क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी होंगे। सरकार ने उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी इस बजट में घोषणा की गई कि हम 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बनाएंगे। आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने में सरकार एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस, जो टूरिज्म इंडस्ट्री पिछले वर्षों से मांग रही थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेटस को अभी जो है 50 डेस्टिनेशंस के लिए प्रोवाइड किया। और उसके साथ साथ में जो 10 लाख से कम की आबादी वाले जगह है, वहां अगर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, 3 स्टार से ऊपर की होटल बनाई जाती है, जिसमें मुझे लगता है कि उड़ीसा के 100% डेस्टिनेशन उसमें क्वालिफाई होते हैं। उसमें अगर होता है तो उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाता है तो होटल और जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में किया गया इन्वेस्टमेंट, मे बी इट इन द वे ऑफ रोपवे कंस्ट्रक्शन और इरेक्शन ऑफ रोपवेज हो सकता है, कन्वेंशन सेंटर बनाने को हो सकता है। हम हॉलिस्टिकली प्लान करते हुए उस पर काम करें कि ओडिशा में हम सीजनल टूरिज्म को नॉन सीजनल समय में उस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम माइस एक्टिविटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी जब बात हो रही थी तब कहा जा रहा था कि जो है ओडिशा का टूरिज्म जो है, मोहंती साहब कह रहे थे कि ओडिशा इज नॉट विजिबल ऑन द इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म। हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ। देखिए, भारत सरकार में जब मुझे एक काम का दायित्व मिला और मैंने ढूंढना शुरू किया, जब हमने कहा कि इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट को हम रिवैम्प करके नए सिरे से बनाएंगे, आई वाज शॉक्ड कि हिंदुस्तान की सरकार के पास में कोई रिपोजिटरी नहीं थी। और मैंने बार बार राज्यों से आग्रह किया, अभी भी उतना जो उसके ऊपर कंटेंट मिलना चाहिए वो कंटेंट राज्य सरकारें उपलब्ध नहीं करा पाई। और उड़ीसा के साथ न्याय की बात करूं तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोकेस जो था पिछले 10 साल में, वो G20 था। उसमें उड़ीसा का चक्र जो है सब जगह दिख रहा था। मुझे लगता है कि उसमें हम कंटेंट प्रोवाइड करें, आप मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करो, वर्ल्ड क्लास कंटेंट प्रोवाइड करो, वी विल बी, आई एंश्योर यू दैट योर कंटेंट्स विल बी डिस्प्लेड। लेकिन उसके साथ साथ में आज टूरिस्ट को, यहां बहुत सारे ट्रैवल एजेंट बैठे, मैं उनके सामने कह रहा हूं, टूरिस्ट की मां को जो है इन्फ्लुएंस करने की ताकत ट्रैवल एजेंट से छीन करके और इंस्टाग्राम पे चली गई। एक इंस्टाग्राम रील जो है वो एक डेस्टिनेशन को बना सकती है।
हम अपने यहां पर किस तरह से उसको उस सेक्टर में किस तरह से मार्केट करें, उसके ऊपर भी हमको काम करने की आवश्यकता। मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के साथ में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि कभी भी ट्रैवल एजेंट ऑब्सोलीट नहीं होगा। आप उठा करके जो है डेटाबेस उठा करके एनालाइज करके देख लीजिएगा, जैसे ही आदमी दूसरी बार ट्रैवल करने निकलता है, तीसरी बार में उसको ट्रैवल एजेंट की जरूरत पड़ने लग जाती है। इसलिए ट्रैवल एजेंट का, फिजिकल ट्रैवल एजेंट कभी ऑब्सोलीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो टूरिस्ट के माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए आज जिस तरह की आवश्यकता, उसके साथ में हमको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बना करके उसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। आज उड़ीसा में जिस तरह की संभावना है, इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, हम उड़ीसा में क्रूज बेस्ड टूरिज्म को खड़ा करके उसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए काम करें। हमको वी विल हैव टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। सी, हम ट्राइबल टूरिज्म की बात करते हैं, लेकिन ट्राइबल टूरिज्म के साथ में अगर हम कैरेवैन को साथ में कनेक्ट कर दें, आज हमारे पास में 30 तरह के 25 तरह के ट्राइब्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ट्राइब हैं। हम एक ट्रेल इस तरह की क्यूरेट करें कि उसमें हम कैरेवन सप्लायर्स हैं हिंदुस्तान में, कुछ लोग यहां भी बैठे हैं, मैं अब आया था तब मुझे दिख रहे थे कैरेवन सप्लायर्स यहां बैठे थे। हम कैरेवन के साथ में ट्राइबल टूरिज्म को उसके साथ में कनेक्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, कैरेवन में जाना है, उसको रहना है, वहां जाकर के वो पार्क करे, अपना जो है उसको रिचार्ज करे, और वहां जाकर के वो एक ट्राइब के घर में जाकर के, एक ट्राइब के असेट्स पे जाकर के रहे, एक क्लस्टर ऑफ ट्राइबल होम स्टेज हम बना दें, वहां जाकर के वो एक्सपीरियंस करे। क्योंकि उड़ीसा ऐसा प्रदेश है जहां सुरक्षा को लेकर के आने वाले व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होती। ये शांत प्रदेश है, सौम्य प्रदेश है, अच्छा भाषा बोलने वाले लोगों का प्रदेश है, अच्छा भोजन कराने वाले लोगों का प्रदेश है। अभी पार्वती जी कह रही थी कि हमारे पास में इतनी सारी मिठाइयां हैं, लेकिन आप इस दृष्टिकोण से हमको चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी कौन सी मिठाई की ग्लोबल पहचान है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। आज मैं जिस शहर से आता हूं, जोधपुर का, मुझे लगता है कि जोधपुर को जितने लोग जोधपुर के किले से जानते हैं, उससे ज्यादा जोधपुर के मिर्ची पकौड़े के नाम से जानते हैं। आज हमारी कितनी सारी ऐसी डिशेज हैं जो ग्लोबल मार्केट में एस्टेब्लिश हो चुकी है। हमको उन अपनी कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करके हम उनको ग्लोबल मार्केट में एस्टेब्लिश कर सकें, इसके ऊपर हमारे पास में आईएचएम है। उस आईएचएम से हम किस तरह से उसके माध्यम से उसको रेडी टू ईट पैकेज कंडीशन में ले जाकर के ग्लोबल मार्केट में ले जा सकते हैं, इसके ऊपर हमको साथ साथ में साइमल्टेनियसली वी नीड टू वर्क। इसलिए लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि टूरिज्म का सेक्टर जो है भारत के लिए बहुत वाइब्रेंट सेक्टर है। आज की तारीख में हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जिन देशों में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन, जिनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, आज की तारीख में हम 12वें पोजीशन पर खड़े हैं। और बाय 2027 द वे आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड द पोटेंशियल इज देयर, by 2027 we'll be surpassing यूनाइटेड किंगडम, और हम 7वें पोजीशन पर उसमें आने वाले। और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसा मैंने कहा, आज जो हमारे हवाई अड्डों की संख्या है, वो हवाई अड्डों की संख्या और हमारा एविएशन सेक्टर जो है, हम दुनिया के आने वाले 1 साल बाद में हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर वाले देश बन जाएंगे। हम उसमें भी यूके को सरपास कर देंगे। केवल यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना हमसे आगे रहेगा, बाकी सब देश दुनिया के हमसे पीछे होंगे। आज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जितने हिंदुस्तान के पास में, टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय इंडियन प्लेयर्स, वो आंकड़ा लगभग 850 के आसपास में है। और हिंदुस्तान के प्लेयर्स ने 1700 हवाई जहाज बुक करा रखे हैं। आने वाले 2 साल में हिंदुस्तान, 3 साल बाद में हिंदुस्तान के जो है एविएशन कंपनीज के पास में नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की संख्या जो है वो 3 गुना बढ़ने वाली। इन सब संभावनाओं को दृष्टिकोण रखते हुए सब स्टेट्स में इस पर जो काम हो रहा है, उड़ीसा में सारा पोटेंशियल उसको लेकर के है। और इतने सारे लोग यहां जो एकत्रित हुए हैं, आप सब लोग जो विचार करें, आप सब लोग बातचीत करें, आप सब लोग मंथन करें, सरकार उसमें फैसिलिटेटर की तरह काम करे, और आप सब लोग जो है उस फैसिलिटी को आगे एक्सपेंड करके टूरिस्ट को यहां तक लाने के लिए, उड़ीसा तक पहुंचाने के लिए अगर आप सब लोग प्रयास करते हैं, हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि हम केवल अपनी डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत पर आने वाले जो जैसा भविष्य दिखाई देता है, आने वाले 5 साल में भारत जो है 2027 के बाद में इस तरह की अपेक्षा की जाती है कि भारत की फॉर्मल इकोनॉमी में जो आज कंट्रीब्यूशन 5.6% है, इट इज गोइंग टू बी 10% इन द इकोनॉमी। अब आप कल्पना करिए कि भारत की इकोनॉमी जो आज 4 ट्रिलियन की है, वो आने वाले 20 साल में जब 30 ट्रिलियन की होगी,
तब उसमें जितनी आज टोटल भारत की जीडीपी है उतना कंट्रीब्यूशन केवल टूरिज्म का होने वाला है। वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ सच ए वाइब्रेंट सेक्टर जो आने वाले समय में इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी का ड्राइवर बनने वाला है। इंडिया आज भी दुनिया के उन देशों में है जिनका हाईएस्ट जो है 12वें पोजीशन पर अभी है कि जिसमें जिनका सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस देशों में टूरिज्म सेक्टर का है। आने वाले टाइम में आने वाले 5 साल में हम उस कैपेसिटी में होंगे कि हम जब 10% के बेंचमार्क को क्रॉस कर पाएंगे तो हम उंगली पे गिन सकने वाले ऐसे देशों की श्रृंखला में होंगे। लेकिन हम सबको मिलकर के अपने इस टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए काम करना पड़ेगा। सरकार भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हम आइकॉनिक डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हम प्रसाद योजना के माध्यम से हमारे जो है आस्था के केंद्र है उनको डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। हम स्वदेश दर्शन के माध्यम से ओवरऑल टूरिस्ट एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए एमिनिटीज के कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं। हमने अभी स्पेशल इंसेंटिव स्कीम के तहत राज्यों को लगभग 3,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ में विदेशी सैलानी भारत में आए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख वीजा को जो किसी भी भारतीय के द्वारा जो है हमारे प्रवासी भारतीय के द्वारा रिकमेंड करके आता है उसकी वीजा फी को एग्जाम्प्ट कर दिया। अब उसको वीजा फी नहीं लगती है। उसके अलावा भारत जो ऐसा देश है, आज दुनिया में गिने चुने ऐसे देश होंगे जिनके पास में 100% बैरिंग 2-3 कंट्रीज जिनसे थोड़ा हमारा ज्यादा स्नेह का संबंध है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन देशों को छोड़कर बाकी सब देशों के लिए हमने ई वीजा फैसिलिटी लागू कर दी। और किसी को भी भारत में आने के लिए किसी भी टूरिस्ट को फॉर एनी पर्पज, इधर इट इज रिक्रिएशन और इट इज बिजनेस और इट इज हॉस्पिटल मेडिकल टूरिज्म, उसको जो है भारत में आने के लिए वीजा लेने के लिए अपने घर से निकल करके एम्बेसी नहीं जाना पड़ता। वो अब जो है ऑनलाइन वीजा अप्लाई करता है और ऑलमोस्ट 72 आवर्स में ज्यादा से ज्यादा समय 72 घंटा उसको वीजा मिलता है। ये जो सुविधा भारत सरकार ने दी है इसके कारण से निश्चित रूप से, और दूसरा जिस तरह से भारत में बदलाव हो रहा है उसको देख करके पूरी दुनिया का आकर्षण एक बार फिर भारत की तरफ होने वाला है। भारत से निकले हुए विषयों की ज्ञान और महत्ता जिस तरह से पूरे विश्व भर में स्थापित हो रही है और जिस गति के साथ में स्थापित हो रही है, मैं तो इसको इससे भी आगे बढ़कर के इस बात को हमेशा कहता हूं कि हम किसी गरीब के घर में जाते तो उसके हमारे मन में उसके प्रति करुणा का भाव हो सकता है, उसके प्रति दया का भाव हो सकता है, सेंस ऑफ कंपैशन हो सकता है, हम उसको कुछ दें शायद ऐसा भाव हो सकता है, लेकिन उसके लिए सेंस ऑफ ओनरशिप का भाव नहीं होता। लेकिन जब कोई समृद्ध हो जाता है तब उसकी सारी चीजें अच्छी लगने लगती। आज भारत समृद्ध हो रहा है, भारत जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, तब भारत के योग का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित होता है। दुनिया सम्मान के साथ में योग को अपनाती है, दुनिया सम्मान के साथ में आयुर्वेद को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ती है, दुनिया सम्मान के साथ में इंडियन लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए अपनाने के लिए आगे बढ़ती है, दुनिया सम्मान के साथ में इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को अपनाने के लिए आगे बढ़ती है। और ये जो है दिस ओपन्स a door of opportunity, rather gateway of opportunity for us। जब हिंदुस्तान इस तरह से सामर्थ्य जब खड़ा होगा तब हमारे डोमेस्टिक पोटेंशियल के साथ साथ में इनबाउंड टूरिज्म पोटेंशियल ऑटोमेटिकली हमारे भारत के लिए ग्रो होगा। और जब पूरी विश्व, जब एक तरफ पूरा यूरोप, लगभग पूरा यूरोप, पहले जर्मनी के लिए कहते थे कि नहीं है, पूरा यूरोप जब एक तरफ रिसेशन की चपेट में है और उस समय में जब भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, द स्काई इज द लिमिट। अगर मैं भारत के लिए टूरिज्म आपकी संभावनाओं के दृष्टिकोण से बात करूं और उसमें सब राज्यों के बीच में जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन के समय में हम उड़ीसा जिसके पास में सब कुछ है, जिसके पास पहाड़ है, जिसके पास जंगल है, जिसके पास वाइल्ड लाइफ है, जिसके पास समुद्र है, जिसके पास में नेचर है, जिसके पास में एडवेंचर है, जिसके पास में दिखाने के लिए आर्किटेक्चर है, जिसके पास हिस्ट्री है, वो सब कुछ जिसके पास में, उस स्टेट में आप सब लोगों का एक साथ यहां आने से निश्चित रूप से उस स्टेट के टूरिज्म पोटेंशियल के साथ में न्याय होगा। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका धन्यवाद। भारत माता की। माननीय मंत्री महोदय के दृष्टिकोण और प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए अशेष धन्यवाद। Let's give a big round of applause once again. Thank you so much, sir, for your valuable insights. As a token of appreciation from Odisha, may I now request Honorable Deputy Chief Minister Srimati Pravati Parida to present a memento to Honorable Union Minister of Tourism and Culture, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji.
Thank you so much, sir, once again. And I would now request Shri Mana Majumdar, Senior Advisor FICCI, to deliver the vote of thanks. Thank you, Diksha. Honorable Union Minister of Tourism and Culture, Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, respected Chief Secretary, Government of Odisha, Sri Balwant Singh Ji, Sri Samarth Verma Ji, Sri J.K. Mahant Ji, ladies and gentlemen, I have a pleasant task in front of me to propose a vote of thanks. I would like to first express our sincerest gratitude to Union Minister Sri Gajendra Singh Shekhawat Ji for kindly gracing the occasion and inaugurating this event. Honorable Minister, you have shared your remarkable insights with us. हम इसके लिए आपके आभारी हैं. I wish to thank Honorable Deputy CM Srimati Prabhati Parida ji for her leadership in the 6th edition of Odisha Travel Bazaar that is instrumental in putting Odisha on the global tourism map. Thank you, ma'am. I would also like to place on record our sincere thanks to Sri Babu Singh ji, who was with us for some time, for his gracious presence. I take this opportunity to thank respected Chief Secretary Sri Manoj Ahuja ji for kindly joining us this evening and for his wonderful statement. I would also like to extend our sincere thanks to Sri Balwant Singh ji for his valuable support and direction to these and several other initiatives. Our thanks are due to Sri Samarth Verma and the entire team for their unwavering hard work in ensuring the success of Odisha Travel Bazaar this edition. Our sincere thanks to all the stakeholders, FTOs, DTOs, and from the entire tourism fraternity. Some of you have traveled from all over the world and from across the country. I take this opportunity to thank you for your kind efforts. Last but not the least, I wish to thank all the delegates, special invitees, friends from the media, our partners, our MC, and the staff and our partners of Mayfair Convention Center. We look forward to tomorrow's program, including B2B meetings, to be a great success. With these words, I would like to request you all to kindly carry out this vote of thanks with a huge round of applause. Jai Jagannath, Jai Hind, Namaskar. Well, that brings us to the end of the inaugural session. Thank you to all our esteemed dignitaries once again. And we'll, of course, request all of you to join us for a networking dinner as well.